हे दिस इज़ मोजो हैंडीक्राफ्ट्स और आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक स्टिकर्स. उससे पहले आई एम मेकिंग सम हर्बल टी बिकॉज द वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर. तो थोड़ा गरम गरम हर्बल टी बना के and I just thought to start my video, and there will be a video on how to make your own herbal tea in my other channel which is known as Herbs and Wellness. If you have not subscribed for the channel, please do. And ये गरम गरम चाय लेके मैं अब बैठूंगी अपने लैपटॉप पे and I will be showing you how to make 4 to 5 types of, maybe could be more, stickers. So ये है मेरा लैपटॉप और मैंने कुछ इसमें कलरफुल ब्यूटीफुल कोट्स सेव कर लिए हैं और इसको मैं निकालने वाली हूँ अपने नॉर्मल इंक जेट प्रिंटर से बिकॉज आई डोंट हैव अ लेज़र प्रिंटर. सो इससे निकाल के और आई विल बी जस्ट कीपिंग इट फॉर 24 आवर्स एंड देन आई विल वर्क ऑन इट, क्योंकि ये इंक जेट प्रिंटर है और इसमें से इंक स्प्रेड होने का डर रहता है. सो यू प्लीज़ डोंट टच ऑन द प्रिंट वंस यू टेक इट आउट. So this is the print and it has got beautiful wordings which I will be showing you later after I cut. इसके अलावा I have also made some beautiful freehand painted labels. और वो हैं ये मेरे फ्री हैंड पेंटेड लेबल्स हैं और ये है मेरे स्टैम्पिंग लेबल्स. And I'll show you some more. These are some of the stickers which I have got printed from the net. I just selected some stickers, basically some patterns, some designs, some pictures, and some of these wordings, some tiny little quotes. Learn something new today. So I will be teaching you how to do these, and these are some more stickers. These are the cute little owls, and these I've already cut. First I got it printed in 300 GSM paper, and after that I have cut it with my punch machine. So let's do these now. Okay, so let me show you how to make these cute little owls. Wise owls love to read. All right, because these are wise owls. अब जो wise होते हैं उनको क्या करना होता है? They have to study. That means I am not wise because I don't study. I do all the craft work. Come on, it's not true. तो अभी हम क्या करने वाले हैं? See, I have got this punch and it is a circle and I want to cut this into a circle. So if I put it like this, तो I will not know कि कितना मुझे काटना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सीधा रखो और just put it inside and just check how much you want to cut. थोड़ा सा साइड से ये लीफ या फिर ये ब्रांच कटेगी, that's okay. Just put it inside and see the right place and punch. See, it's come out. Yes, love to read. Wise owls. Okay, so this was a very thick paper. This is not a sticker paper. This is a very thick 250 GSM paper. So this is going to be very hard. Now how we will convert this into a sticker, that I will show you. All right, so now we go to the next step. Now I have this sellotape holder. Fine, if you don't have, you just do simply with your hand. Ye on the side I have, I hope you can hear me, I have put the tape, I have stuck it on the
ग्लास, और फिर यहाँ पे मैं इसको ऐसे ऐसे करके I will just put it on one line like this. Just keep pulling all the stickers you want. थोड़ा नीचे करती हूँ इसको, and keep little gap in between, and like this, you know, just stick it. Okay, और भी है, 3 more to go. So this you will do this and the last one. Okay, so all ready. Keep pressing and going ahead. थोड़ा ऊपर करना इसको. Keep pressing, keep pressing, keep pressing, keep pressing. Done. All right, ये हो गया. तो अभी ये ऐसे just press it and make sure all the bubbles have come out. Okay, now we will turn this upside down. First to remove all the bubbles. Generally I remove my bubbles like this with the scissor, like this, like this. Okay, so this is done. Now we will just remove it. I can remove from here also. Just pull it, it will come like this. Okay, so now just turn it upside down like this, and this time I'm going to put the tape from one side and then go like this. Okay, now again same procedure from the back side. Just take your tape and keep pressing and going, pressing and going, and done. Okay, so this is done. Now again same procedure, just remove all the bubbles. Back of a scissor is very, did I say knife before? Okay, I'm sorry for that. Back of the scissor is very handy for removing all the bubbles. This is what generally I do, like this. So can you see I've removed all the bubbles. ये ऐसे ऐसे आपको नहीं दिख रहा है क्या? I'll just show you the zoom part of it. Zoom, 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 zoom. All the zoom part doing so much zumba. And last one, and it is done. See, so इसको हटाते हैं अभी, like this, and here it comes. You can see now this is the sticker. Finally it's been made. अभी ये stick कैसे होगा? Okay, that is another part. So we are going to do that in the next step. So ये मैंने already दोनों साइड से चिपका दिया है. You can see both the sides I have put sellotape. And now the question is, how are we going to stick? Okay, how are we going to stick this? Okay, so the answer is this is double-sided tape, and what I will do is I will stick the tape behind all the stickers, and just take little like this. So this is how it will work. Okay, like this you have to stick behind all. Finally, these are the variety of stickers I have made. Let me explain. मैंने आपको बेसिक पैटर्न बताया था, वो था प्रिंट करके और उसके बाद उसके ऊपर आप सेलो टेप लगाओ, और फिर इफ़ यू वांट यू कैन पुट डबल साइडेड टेप. अदरवाइज यू डोंट हैव टू पुट डबल साइडेड टेप. जस्ट नॉर्मल स्टिकर निकालना है और फिर इसके
ऊपर सेलो टेप लगा के इसको सील कर दो. दैट्स इट. दिस इज़ ऑन अ स्टिकर पेपर. ओके, एंड this is also on a sticker paper, and this I have done with stamps. I have variety of stamps. बहुत सारे stamps हैं मेरे पास. तो उन stamps को मैंने पहले स्टैम्पिंग करी पेपर में. ओके, फिर ये मैंने वाटर कलर्स से कलरिंग करी है और थोड़े से फिर बाद में हाईलाइट कर दिया. दिस आई हैव डन द प्रिंटिंग. इंटरनेट में मैंने गूगल करा और थोड़े से अच्छे स्टिकर्स, क्यूट स्टिकर्स टाइप करा और मुझे ये मिला. ये भी स्टैम्पिंग है. दिस इज़ नॉट अ स्टिकर बट आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टिकर लाइक दिस, क्योंकि ये है कार्ड स्टॉक. इसके पीछे स्टिकिंग शीट नहीं है, बट आई विल मेक इट स्टिकर विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, सेलो टेप लगा के. और फिर ये है यहाँ पे सिमिलर. ये मैंने स्टिकिंग लेबल शीट्स जो मिलती हैं, आई गॉट इट फ्रॉम अमेजोन. यू कैन ऑल्सो बाय दैट. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे मैंने ये स्टैम्पिंग करी है और ये भी स्टैम्पिंग करके फिर मैंने कुछ इसमें और ऊपर से भी स्टिकर लगाया है. दीज आर 2 स्टिकर्स. अब पीछे से आप रिमूव करके इसको कहीं भी स्टिक कर सकते हो. ये मैंने वाटर कलर किया है ऑन द स्टैम्पिंग. ये भी स्टैम्पिंग है, ये भी स्टैम्पिंग है. ऑल दीज आर नाइसली डन विथ वाटर कलर and these are all stamping. That is why the flowers have come out so beautifully. So these are the 4-5 types of stickers I have made, and I hope you have liked it. Do try and let me know how you like the sticker making video. Till then, bye bye, take care.